everyone, myself Manas Mishra, and you are watching Code with Manas YouTube channel. So let's start. So guys, in this video I'm going to tell you about the ways to write a variable. देखिए, एक वेरिएबल को राइट करने के कई तरीके होते हैं. बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको 3 वेज बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, द फर्स्ट वे टू राइट ऑफ वेरिएबल इज camel case. I will write here as the camel case. Okay, so how to write a variable in a camel case? Let's see. So camel case में होता क्या है, जो फर्स्ट वर्ड होता है इन अ वेरिएबल, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल नहीं रहेगा. लाइक मैं ऐसे लिखूँगा myVar, ऐसे रहेगा. दिस इज कॉल्ड द कैमल केस. एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया myVar इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड. दिस इज द वे हाउ वी राइट a variable in a camel case. So let's see our second way, that is the Pascal case. Pascal case. Yes, in this case the all words of a variable are capital, like myVar. Like that we write a variable in a Pascal case is equals to hello. Yes, and now if I will type here print myVar, and will give me the just a second guys, यहाँ पर गैप नहीं हो सकता है. टू वेरिएबल नेम के बीच में गैप नहीं होता. यस, नाउ इट इज करेक्ट. सो दिस वाज द Pascal केस. एंड द थर्ड वन इज आवर स्नेक केस. इन दिस केस द वेरिएबल्स वर्ड्स आर separated by each together by the underscore. लाइक ऐसे राइट करते हैं my_var, like that. Okay, myVar is equals to Manas, and if I will print it myVar, it will give me the output that is Manas. So guys, I hope you like this video and it will help you in understanding better about the Python. So thank you.